All right then students, prior to this topic, we have already covered up the meaning of bookkeeping, the need of bookkeeping. Today we are starting with the concept of accounting. Now, what is accounting? Accounting is the analysis and interpretation of bookkeeping records. आपने जो बुक कीपिंग करी, जो आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, उसको इंटरप्रेट करना और उसको एनालाइज करना, वो क्या है? आपकी अकाउंट। अकाउंटिंग को हम बिजनेस की लैंग्वेज भी बोलते हैं, विच मीन्स अकाउंटिंग क्या है? आपके बिजनेस की भाषा, द वे इट कम्युनिकेट्स, दैट इज व्हाट अकाउंटिंग। सो अकॉर्डिंग टू AICTA, जो आपकी बॉडी है, उन्होंने क्या मीनिंग दिया है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की? दे हैव गिवन द डेफिनेशन एज अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. So हमारी जो ये definition है, हमें एक कोई भी डेफिनेशन जौन सी है, दिस इज बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, विच आई फील इज द मोस्ट प्रिसाइज एंड मोस्ट इलैबोरेटिव डेफिनेशन। ये क्या कहती है? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का एक सही ढंग में और पैसों की टर्म्स में ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो एक फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, विच मीन्स जिसमें हमारी कोई मनी का, मॉनेटरी वैल्यू का देन लेन हो रहा है, एंड ऑल्सो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ इट। Is the meaning of accounting clear to each one of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, अब हमने बुक कीपिंग पढ़ा था इससे पहले, है तो बुक कीपिंग में भी ऐसा कुछ ही, बट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference? What are the points of difference between your bookkeeping and your accounting? अगर अब हम स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बुक कीपिंग आपका फर्स्ट स्टेप है, जिसके बाद आपकी अकाउंटिंग जौन सी है वो शुरू होती है। Whereas your accounting, it follows after bookkeeping procedures are completed. बुककीपिंग का काम खत्म हो गया, उसके बाद से आपका अकाउंटिंग का प्रोसीजर शुरू होता है। जब हम स्कोप की बात कर रहे हैं, बुककीपिंग का स्कोप थोड़ा लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? सिर्फ रिकॉर्ड करना, पोस्ट करना ट्रांजेक्शन्स को, बैलेंस करना और ट्रायल बैलेंस बनाना। Whereas apart from all this that is covered under accounting, फाइनल अकाउंट्स बनाना, एंड ईयर तक इनकॉर्पोरेट करना एडजस्टमेंट्स को, फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालना, ये सब किस में आ जाता है? आपका अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक आपका क्लरिकल टास्क है, विच कैन ऑल्सो बी डन बाय द जूनियर स्टाफ, whereas your accounting, it is a task that involves specialized skills, analytical abilities, so therefore it is a task that is done by the senior staff. When we are talking about operation, how they work, so bookkeeping is only concerned with recording of transaction in a systematic way and in chronological order, whereas your accounting, it classifies the transactions, it summarizes the transactions, and it interprets the results. If we talk about the activities that are there, bookkeeping में सिर्फ journal बनाना, ledger बनाना और trial balance बनाना. Accounting में फाइनल अकाउंट्स बनाना, P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना, that is there. If we talk about if any adjustments are required to be done, बुक कीपिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। जो एडजस्टमेंट्स हैं आपकी, वो किस में होती हैं? अकाउंटिंग में, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। Anyone having any doubts in the differentiation? No, ma'am. Okay. So coming to the process of accounting, process of accounting, in the first place, it starts with the identification of transaction.
अकाउंटिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को. अ ट्रांजैक्शन इज बेसिकली एन एक्सचेंज एक्टिविटी जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट को कुछ ना कुछ मिलता है. जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, जिससे खरीदा उसको पैसे मिले, जिसने खरीदा उसको रॉ मटेरियल मिला. So therefore, any such event, any such transaction that is identified. Secondly comes measurement of the identified transaction and events. अकाउंटिंग में हम हर एक चीज को एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट में मेजर करते हैं, विच इज यूजुअली द रूलिंग करेंसी ऑफ दैट कंट्री वेयर वी आर रेफरिंग टू. जैसे इंडिया में रुपी हो जाएगा, यूके में पाउंड हो जाएगा, यूएस में यूएस डॉलर हो जाएगा, कनाडा में कैनेडियन डॉलर हो जाएगा. सो दैट वेज एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट विच इज यूजुअली द यूनिट, यूजुअली द रूलिंग करेंसी ऑफ दैट कंट्री. हर एक इवेंट को, हर एक ट्रांजेक्शन को उसमें मेजर किया जाता है, उसमें एक्सप्रेस किया जाता है. देन कम्स रिकॉर्डिंग. दिस इज द बेसिक फंक्शन अंडर रिकॉर्डिंग. इससे क्या कंसर्न है, व्हाट इज इट कंसर्न विद, दैट इट इज कंसर्न विद द फैक्ट दैट ईच ऑफ द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, they should be recorded in a significant and in an orderly manner. Recording is usually done in a book that is called as journal. जो हमारी एक बुक है, रिकॉर्डिंग किसमें करी जाती है, रिकॉर्डिंग करी जाती है आपकी जर्नल में. जर्नल में आगे देर कैन बी अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ इट आल्सो. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स लाइक योर कैश जर्नल, जिसमें हम कैश के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे. देयर कैन बी योर परचेजेस जर्नल, जिसमें हम परचेजेस के बारे में रिकॉर्ड करेंगे. सेल्स बुक, जिसको हम सेल्स के बारे में रिकॉर्ड करेंगे. सो दैट वेज देयर कैन बी different categories to it, but each and every business transaction that is to be recorded in a book that is called as your journal. Then comes classifying. क्लासिफिकेशन क्या है कि हम सिस्टमैटिकली हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज करते हैं, ग्रुप करते हैं. जो कॉमन ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह, जैसे परचेजेस की एक जगह कर दी, सेल्स की एक जगह इकट्ठी कर दी, एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे कर दिए. तो इस तरह से हम हर एक ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन करी जाती है एक बुक में जिसको हम बोलते हैं ledger. So there is a book that is called as ledger. Ledger में हम सारा जौन सा है क्लासिफिकेशन का काम करते हैं, कॉमन ट्रांजैक्शंस को ग्रुप करके एक हेड के अंडर डाल देते हैं. The next step that comes in the process, that is summarizing. जो हमने डेटा क्लासिफाई किया है अब उसको समराइज भी करना पड़ेगा ताकि वो क्या बने, वो हेल्पफुल बन जाए जो लोग हैं जिन्होंने उसको यूज करना है उसके लिए. समराइजिंग में क्या आ जाता है, जैसे आप अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स की स्टेटमेंट बनाओ, आप ट्रायल बैलेंस बनाओ जो आपका स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट बनाओ जिससे आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा, बैलेंस शीट बनाओ जिससे हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का पता चलेगा. Once you have summarized, the next step that comes, that is concerned with analysis. Now you are going to analyze, to study what are the financial strengths and weaknesses of the enterprise. Statements को analyze करना, that is covered under your analysis. Then comes interpreting. जो आपने analyze किया उसको किस तरह से हम उसको मीनिंग दें, उसको कोई सिग्निफिकेंस दें ताकि लोगों को, जो मैनेजमेंट है जिसने उसको यूज करना है उसके लिए वो कुछ काम की बन जाए. तो दैट वेज दैट कम्स अंडर योर इंटरप्रेटिंग. एंड लास्ट स्टेप दैट कम्स अंडर द प्रोसेस इज कम्युनिकेटिंग. मीनिंगफुली एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, बट उसको एक प्रॉपर फॉर्म में एक प्रॉपर पर्सन कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा.
उसको बताना भी पड़ेगा, उसको आगे भेजना भी पड़ेगा टू द कंसर्न पार्टीज, टू द people, so that they can see, they can look into the aspect that how the business is performing. Anyone having any doubts in this 8 steps in the process of accounting? Any student having any doubts? Ma'am, analyzing. एनालाइज बच्चे जितना हमने चीजें बना ली, हमने स्टेटमेंट बना ली है, तो उसको अब हम ये देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, जो मुनाफा हुआ हमें इस साल का, तो वो कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या उसका क्वांटम सही है कि नहीं है, ताकि हम बिजनेस की स्ट्रेंथ्स, उसकी फाइनेंशियली क्या उसकी स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेसेस हैं, वो देख सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके. Is this clear? Yes, ma'am. Any other doubt? No, ma'am. Any other student having any other doubt? No, ma'am, clear है. Okay, so somebody has asked about interpretation. Just give me a moment, बच्चे. So one of the student has asked about interpretation. जैसे बच्चे आपने एक चीज को एनालाइज कर लिया, आपने अपने व्यू पॉइंट से किया. अब मैं अगर आपको लेट्स सपोज, let me, so we are analyzing, let's say, the profits of a business enterprise for 5 years. First year, ओके, सो यू कैन लुक इनटू दिस, राइट. मैंने ये रॉ डेटा यहाँ पे लिख दिया है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज के 5 सालों का प्रॉफिट कितना है. पहले साल 50,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे 60, फोर्थ 1 लाख, फिफ्थ 1,50,000. अब हमें ये पढ़ के क्या पता चल रहा है? अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो मैं क्या एनालाइज करूंगी? मैम, कितना प्रॉफिट हुआ? अगर आपस में मैं इनको कंपेयर कर रही हूँ बच्चे, तो मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में कर रही हूँ, तो मैंने एनालाइज किया कि पहले साल तो 50,000 था, दूसरे साल कम हो गया, तीसरे साल से फिर ये बढ़ने लग पड़ा. ये मैंने एनालाइज कर लिया. अब इस चीज को इंटरप्रेट करना, इस चीज को एक्सप्लेनेशन देना, ताकि एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बन जाए, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन. सो इफ आई वर टू इंटरप्रेट दिस, हाउ वुड आई से दैट बाय लुकिंग इनटू द कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट और द वैल्यूज ऑफ प्रॉफिट फॉर 5 years, we can make out that in the second year the company had a big downfall in their amount of profit. Profit होना था 50,000, तो कितना रह गया? Only 10,000. But thereafter, from the third year, it has started increasing. So this is what this information was given. This information is specified. उसको interpret करना, that means we are processing it, we are using the data to see क्या हुआ. अब ये 50,000 से जो 10,000 गया प्रॉफिट, ये क्यों हुआ, किस टाइम पे हुआ, क्या ये चीज फिर से होएगी? What were the conditions that the business was facing at that time? So that ways, that is your interpretation. Any other doubt? Is interpretation clear now? Yes, ma'am. Okay.
So coming to the next topic for today, which are your objectives of accounting. That why do we do accounting? What are the main objectives? What are the main points for it? That is your objectives of accounting. So the first and foremost objective of accounting is to keep systematic record. Accounting क्यों करी जाती है? ताकि हम सारी business transactions का एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सके, ताकि ह्यूमन मेमोरी पे अननेसेसरी बर्डन ना आए. Then comes to protect and control the business properties. So हम accounting क्या है? Accounting tries to protect and control the business properties from unjustified or unwanted use. जैसे कि बिकॉज जो अकाउंटिंग है वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को, प्रोप्राइटर को, कि कितना फंड इन्वेस्टेड है, कितना बिजनेस ने किसी को पे करना है, कितना किसी ने रिकवर करना है. सो देयर फॉर दिस information it becomes helpful to the manager or to the owner to control the business and to control the properties of the business. Then comes to certain the operational profit and loss. कि जो आप काम कर रहे हैं, आप जो बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, आपको उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है. Then to probe the causes resulting into profit earned or losses suffered. Accounting, it helps us in knowing the exact reason that why we have earned this much of profit, and if there are losses, what are the reasons for the losses. I hope you all know profit is a situation when your income they are more than your expenses, and losses is a situation when your income is less than your expenses. So that ways कितना प्रॉफिट हुआ है और क्या उसका कारण है, we can look into that also. Then comes to ascertain the financial position of the business. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बिजनेस को कितने का मुनाफा हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है. बिजनेस को ये पता चलता है कि देयर इज अ स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट दैट इज प्रिपेयर्ड. उससे ये पता चलता है कि कितने उसके एसेट्स हैं, क्या चीजें वो ओन करता है, क्या चीजें वो ओ करता है, कितने पैसे उसने बाहर वालों को देने हैं. So that ways the financial position and the financial health of a business that can be judged. Then comes to ascertain the amount payable or receivable. हमने लोगों को कितने पैसे देने हैं और लोगों से कितने पैसे लेने हैं, उसको ascertain करना, उसको accumulate करना, that is easier. Then comes to watch the movement of capital. अगर मैं कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, if I'm putting my money into business, I would want to know कि वो मेरा business कैसे prosper कर रहा है. Whether my capital it is multiplying, it is increasing, or my capital is diminishing. So in order to watch the movement of capital, your accounting is there. Then comes to prevent errors, fraud and theft. जब हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे कि हमने कितनी आइटम्स खरीदी, कितनी आइटम्स बेची, तो एक बिजनेस में ना तो चोरी होएगी, ना कोई बंदा कोई फ्रॉड कर पाएगा और ना ही बंदा कोई एरर कमिट कर पाएगा. Then to know the progress of business, we can analyze the trend for various years to see that how we are progressing, how the business is progressing. Then to have valuable information for legal and tax purpose, the information that is communicated by your financial accounting that provides as a good information stock for the use of various legal or for taxation purposes. Any student having any doubts? No, ma'am. I hope it is clear. Yes. Yes, ma'am. So we have a little less time for today. Otherwise, we would have discussed even your
points of advantages and disadvantages, but I'll take up the topic of advantages and disadvantages tomorrow. If in case there are any doubts with the topic that has been taken up today, I can clear that up. किसी को meaning ना समझ आया हो, कोई point process का ना समझ आया हो, objective का ना समझ आया हो, any student whose attendance is not marked apart from Harshit Malhotra? Ma'am, Tanisha, roll number 26. All right जी, Ma'am, मेरी attendance. बच्चे अपना नाम बोल लो. Ma'am, Supriya Gupta 21522. बच्चा आपकी तो पहले ही हो चुकी हुई है अटेंडेंस. Okay, ma'am. Anybody else? Amit Kumar, what's your roll number, बच्चे? All right then, students, this is it for today. Thank you for joining and have a good day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am.